स्किल सेंटर उद्घाटन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक दक्षता विकास आउ एक पाद आग को जाइछन्ति राज्य सरकार निजुक्ति क्षेत्र में हो बा लोके निजे किपरि आत्मनिर्भरशील हे से दिगरे करा जाइछे पदक्षेप मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसी पहुंची वर्ल्ड स्किल सेंटर को गोटे विश्वस्तरीय स्किल सेंटर करा उद्घाटन कर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक किपरि भावे साधारण लोकंकर बा छात्र छात्री युवक युवतींकर दक्षता विकास हो पारिबो दक्षता विकास विभाग सह दक्षता विकास कर्तृपक्ष मध्य गोटे करा जाइछि जोंतरे के अथॉरिटी देखुचंती केते दक्षता विकास होछि कारण न्यू स्टार्टअप कथा मध्य उठे से स्टार्टअप आपण देखुचंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन कले से वर्ल्ड स्किल सेंटर को जहाँ कि लोकंकर दक्षता वृद्धि पूर्वर कि विभिन्न अलग अलग स्थान आज गोटाए प्लाटफर्म को अणा विश्वस्तरीय स्किल सेंटर जो कि लोकंकर दक्षता विकास ट्रेनिंग भी दि ऑफिस कौन कौन से करें तांकर दक्षता को देखिए सब करा मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करछंती बेकार युवक युवती जो मैंने स्टार्टअप करने को चाहते से माने निज परिश्रम निज स्वावलंबी हो पारे एटू से माने पाउछंती जो ट्रेनिंग पाइबे. We will be going to the second floor to visit the labs. आईटीआई करके से माने किछि करि पारेबे देश पई हमरो स्किल बहुत जरूरी आ गोटे झियो जदि स्किल हैला से देश पई जति के स्किल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करछंती भुवनेश्वर मंचेश्वर शिल्पांचल रे थिबा वर्ल्ड स्किल सेंटर दक्षता विकास विभाग रही दक्षता विकास कर्तृपक्ष मध्य करा जायछि किपरि भावे लोकंकर दक्षता विकास हो पारिबो गाँव रु शहर पर्यंत अनेक बेकार युवक युवती अपेक्षा करुछंती कौन करिवे केमिति कौन करिवे से मानको आत्मनिर्भरशील करबा को तांको दक्षता अनुसार ट्रेनिंग दिया जाउछि कि सिलाई रु आरंभ करी कि गार्डनिंग करुछंती ए सब दक्षता विकास तांकर करा जिवो दक्षता ऊपर ट्रेनिंग सी जहाँ जानी जहाँ करें आहरी विकसित करने को भितर दक्षता किपर वर्ल्ड क्लास सेंटर करा अर्थात विश्वस्तरीय आम युवक युवती स्टार्टअप हूँ बा निज आत्मनिर्भरशील हो बैंक लोन नहीं काम करूँ जहाँ दक्षता ता अनुसार से स्टार्टअप करा दक्षता विकास को मपा जाऊला और दक्षता विकास में राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप मान से माने किपरि भावे भलरे ट्रेनिंग पाई परिबे सेथि पे व्यवस्था मध्य करा जायछि आज ए वर्ल्ड स्किल सेंटर रे विश्वस्तरीय ट्रेनिंग से मानको मिलिबो आपण जो थिरे निपुण अछंती सेटा आपणकर दक्षता को आहुरी विकास करिवो ट्रेनिंग दिया जिवो जहा कि आगामी दिन रे आपण को सही क्षेत्र रे आपण निजे करि परिबे निजे वाणिज्य आरंभ कर परिबे व्यापार आरंभ कर परिबे. Our trainer, Mrs. Sushri Sasmita Sahu from WSC, is escorting Sir. The Commercial Air Conditioning and Refrigeration Distribution System Lab is designed for the comprehensive and advanced work involving industrial and refrigeration equipments. The trainees who will get trained will be able to learn the basics of refrigeration and air conditioning by actually performing experiments on the working models. The next lab that he is visiting is the Building Management System Lab. Any building, be it residential or commercial, has a sophisticated monitoring and regulatory system called the Building Management System. This lab is going to make the trainees have hands-on experience on the building management system. Trainees will be able to learn about building automation software and so on. The main focal point of this lab, as you can see, is the chiller plant unit, which is an integral part of any building management system. Today marks an important milestone as we add a new chapter in the skill ecosystem of Odisha. It gives me a deep sense of satisfaction and happiness on the inauguration of World Skills Center. Skill development has always been a priority for my government.
Our aim is to meet the aspirations of the youth as well as create a pool of increased opportunities for them. Lot of emphasis is being accorded by my government to short-term, long-term, and advanced skill training through industry collaborations and certifications. We are intensely investing in the future of youth by creating infrastructure and mechanisms for making them future ready. This will help our youth to stay ahead of the competition in the professional world. Within a short span, the results of this investment have added feathers to the Odisha story. Gold medals win at World Skill Competition and innovations demonstrated by our skill institutes during the pandemic have set the standards worth emulating. Our ITIs are among the best in the country. Sustained efforts have been made by OSDA and Skill Development of Technical Education Department to improve the skill ecosystem of the state are commendable. World Skills Center will further support our endeavor by providing advanced skill training to our youth and prepare them for competing at the global level. World Skills Center will take a lead in taking a giant leap of transformation from the present to the future for all polytechnics and ITIs in Odisha. World Skills Center will also drive skill competitions and will be landing point for all industry collaborations in skill ecosystem. I also take this opportunity to express my gratitude to Development Bank and ITE Education Services, Singapore, for collaborating with Odisha for setting up a premier skill institute at par with global excellence. I'm sure that with large support from all stakeholders, World Skills Center and Odisha will set a new standard in technical education and vocational training. Biju Babu always dreamt of an Odisha where youth acquire world-class skills and make a name for themselves globally. On his 105th birth anniversary, I am happy to dedicate World Skills Center to the people of Odisha. Bande Utkal Janam.